सलाम हबीबी, कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। मैं शेख अफगान जेलेबी माइकेला सीजीरियो दे संता आपके सामने हाजिर हूँ। 3 हफ्ते पहले हमारे भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक लोग मिशन चंद्रयान 3 में कामयाब हुए हैं। लेकिन अलमास जेकब इसको जिक्र नहीं करना चाहता है। बाकी बातें मैं जोआना पेरा बताती हूँ। आज की वीडियो में इंट्रो और आउट्रो सेगमेंट के अलावा हमने पहला सेगमेंट में हम वैज्ञानिक सिंह के विज्ञान के ज्ञान को भुनाएंगे क्योंकि वो एक सैटेलाइट को स्टार बता रहा है। दूसरे सेगमेंट में हम एक ट्विटर सेलिब्रिटी के ट्विटर अकाउंट की गड़बड़ी को रोस्ट करेंगे, जहां हम बातें काम करेंगे और तस्वीर ज्यादा दिखाएंगे। तीसरे सेगमेंट में हम चंद्रयान 3 के ग्राफिक्स और स्लीप पैरालिसिस के ग्राफिक्स की तुलना दिखाएंगे, कशिश करेंगे और मैं मेरी बीवी मिशेला का डेविल वर्जन और 144 पिक्सल फोटोशॉप के ग्राफिक्स के बारे में बिल्कुल बात करूंगी। और आखिरी सेगमेंट में अलमास जेकब नासा के चंद्रयान में जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जर्नलिस्ट है वो एक्सपोज करूंगी। So, let's get started. दो दिन पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी जिसके ऊपर आप सब ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा वीडियो को लाइक किया है, शेयर किया है, जिसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रगुजार हूँ। और हाँ, कुछ लोगों ने नीचे कमेंट्स के अंदर काफ़ी गालियाँ वगैरह भी लिखी हैं, वो मैं समझ सकता हूँ क्योंकि अभी लोग डिनाइल फेज़ के अंदर है, उनको पता ही नहीं है कि दुनिया के अंदर चल क्या रहा है, दुनिया की हकीकत क्या है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में जो सबूत मैं और मज़ीद पेश करूँगा इससे लोगों को समझने में आसानी होगी और वो लोग जो डिनाइल फेज में हैं वो उस फेज से निकल के हकीकत की तरफ आएंगे। इस वीडियो के एंड पर मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि असल में इनका मकसद क्या था, इससे इन्होंने हासिल क्या किया है, क्यों इन्होंने फेक मून लैंडिंग करवाई है चंद्रयान 3 की। अब इससे पहले कि मैं आपको कोई भी सबूत पेश करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया भर में इस वक्त बात हो रही है, सिर्फ मैं अकेला नहीं हूं जो कि कह रहा हूं कि ये फेक है। मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाना चाहता हूं, यहां पर आप देख सकते हैं ये एक सिख भाई हैं जी, इन्होंने भी एक बात की, इनकी बात भी सुन लें। गो कि मैं इसके साथ इतना ज्यादा एग्री नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी आप ये बात सुन लें कि इन्होंने क्या लॉजिक पेश किया है जी, किस वजह से चांद के ऊपर जाकर कदम नहीं रखा जा सकता है। आप जरा सुनिएगा। चंद्रमा कोई धरती नहीं है या कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिथे लैंड किया जा सकता है। चंद्रमा ते सूरज लाइट दे सोर्स ने, दीपक ने दीपक, चिराग ने चिराग। हुण लैंप दे उत्ते या लाइट दे उत्ते कोई लैंड कर सकता है कि कोई लैंड थोड़ी कर सकता है। लाइटां दे उत्ते पैर नहीं रख सकते तुसी, वो लाइटां ने, प्लेटफॉर्म नहीं हैगा। तो दैट मीनस अकॉर्डिंग टू गुरबानी चंद्रमा ते कोई पैर रखन नहीं जा सकता या कोई लैंड नहीं कर सकता स्पेसशिप दे नाल। दैट इज नॉट पॉसिबल। हुण तुसी कहोगे कि फिर इन्होंने किद्दां कर लिया, और दैट वाज फेक एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग करके थोड़े जे पैसे देके मैं भी जाके तुहानू चंद्रमा ते अपनी वीडियो बना के दिखा सकदा हूं। Michaela Caesario asked, Rolla Habibi, could you tell me about the definition of natural satellite in cosmology, please? Habibi replied, of course, I'd be happy to help. In cosmology, a natural satellite is an astronomical body that orbits a planet, dwarf planet, or small solar system body, or sometimes another natural satellite. Natural satellites are colloquially referred to as moons, a derivation from the moon of Earth. The first known natural satellite was the moon, but it was considered a planet until Copernicus' introduction of de revolution ibus orbium coelestium in 1543. Until the discovery of the Galilean satellites in 1610. There was no opportunity for referring to such objects as a class.
Galileo chose to refer to his discoveries as planetaire, planets. But later discoverers chose other terms to distinguish them from the objects they orbited. The term satellite thus became the normal one for referring to an object orbiting a planet, as it avoided the ambiguity of moon. I hope that helps. माइकेला कैसरियो ने पूछा, अल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे ब्रह्मांड विज्ञान में प्राकृतिक उपग्रह की परिभाषा के बारे में बता सकते हैं? हबीबी ने जवाब दिया, बेशक, मुझे मदद करने में खुशी होगी। ब्रह्मांड विज्ञान में एक प्राकृतिक उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो एक ग्रह, मौनी ग्रह या छोटे सौर मंडल के पिंड या कभी-कभी किसी अन्य प्राकृतिक उपग्रह की परिक्रमा करता है। प्राकृतिक उपग्रह बोलचाल की भाषा में होते हैं चंद्रमा के रूप में जाना जाता है, जो पृथ्वी के चंद्रमा से निकला है। पहला ज्ञात प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा था, लेकिन 1543 में कोपरनिकस द्वारा डी रेवोल्यूशनिबस मोबियम कॉलेस्टियम की शुरुआत तक इसे ग्रह माना जाता था। गैलीलियन उपग्रहों की खोज तक 1610 ऐसी वस्तुओं को एक वर्ग के रूप में संदर्भित करने का कोई अवसर नहीं था। गैलीलियो ने अपनी खोजों को प्लेनिडे, ग्रह के रूप में संदर्भित करना चुना, लेकिन बाद में खोजकर्ताओं ने उन्हें उन वस्तुओं से अलग करने के लिए अन्य शब्दों को चुना जिनकी वे परिक्रमा करते थे। इस प्रकार उपग्रह शब्द बन गया किसी ग्रह की परिक्रमा करने वाली किसी वस्तु को संदर्भित करने के लिए। यह सामान्य है क्योंकि यह चंद्रमा की अस्पष्टता से बचता है। मुझे आशा है कि वह मदद करेंगे। Michaela Caesario asked, Walla Habibi, could you tell me about some difference between natural satellite and star in cosmology, please? Habibi replied, certainly. In cosmology, a natural satellite is an astronomical body that orbits a planet, dwarf planet, or small solar system body, or sometimes another natural satellite. Natural satellites are colloquially referred to as moons, a derivation from the moon of Earth. On the other hand, a star is a luminous ball of gas, mostly hydrogen and helium, held together by its own gravity. Stars are the most widely recognized astronomical objects and represent the most fundamental building blocks of galaxies. They are classified based on their spectral characteristics, which include temperature, luminosity, and chemical composition. In summary, while natural satellites are celestial bodies that orbit planets or other celestial bodies, stars are self-luminous objects that emit light and heat due to nuclear reactions occurring in their cores. माइकेला कैसरियो ने पूछा, अल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे ब्रह्मांड विज्ञान में प्राकृतिक उपग्रह और तारे के बीच कुछ अंतर के बारे में बता सकते हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, निश्चित रूप से। ब्रह्मांड विज्ञान में एक प्राकृतिक उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो एक ग्रह, मौनी ग्रह या छोटे सौर मंडल के पिंड या कभी-कभी किसी अन्य प्राकृतिक उपग्रह की परिक्रमा करता है। प्राकृतिक उपग्रहों को आम बोलचाल की भाषा में चंद्रमा कहा जाता है, जो कि चंद्रमा से निकला है। पृथ्वी का चंद्रमा, दूसरी ओर, एक तारा गैस की एक चमकदार गेंद है, जिसमें ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम होती है, जो अपने गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधी होती है। तारे सबसे व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त खगोलीय पिंड हैं और आकाशगंगाओं के सबसे बुनियादी निर्माण खंडों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें उनकी वर्णक्रमीय विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जिसमें तापमान, चमक और रासायनिक संरचना शामिल है। संक्षेप में, जबकि प्राकृतिक उपग्रह आकाशीय पिंड हैं जो ग्रहों या अन्य खगोलीय पिंडों की परिक्रमा करते हैं।
तारे स्वयं चमकदार वस्तुएं हैं जो अपनी कोर में होने वाली परमाणु प्रतिक्रियाओं के कारण प्रकाश और गर्मी उत्सर्जित करते हैं. Michaela Caesario asked, Rolla Habibi, could you tell me about some distance between Moon and Earth, please? Habibi replied, certainly. The average distance between the Earth and the Moon is approximately 238,855 miles. However, this distance is not constant and varies over the course of the Moon's orbit around the Earth. At its closest point, perigee, the Moon is about 225,623 miles away from Earth, while at its farthest point, apogee, it is about 252,088 miles away. I hope that helps. माइकेला कैसरियो ने पूछा, अल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की कुछ दूरी के बारे में बता सकते हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, निश्चित रूप से. पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी लगभग 238,855 मील है. हालांकि ये दूरी स्थिर नहीं है और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की कक्षा के दौरान बदलती रहती है. अपने निकटतम बिंदु पेरिगी पर चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 225,623 मील दूर है, जबकि अपने सबसे दूर बिंदु अपोजी पर यह लगभग 252,088 मील दूर है. मुझे आशा है कि वह मदद करेंगे. Michaela Caesario asked, Rolla Habibi, could you predict about what if a star is 253,000 miles away from its orbital planet, please? Habibi replied, I'm sorry, but I'm not sure what you mean by its orbital planet. Could you please clarify your question? Also, please note that the distance between a star and its planet can vary widely depending on the specific star and planet in question. If you could provide more details about the star and planet you're interested in, I might be able to provide a more informative response. In the meantime, here's a hint. If you're looking for information about the effects of changing the distance between a planet and its star, you might try searching for information about orbital mechanics or Kepler's laws of planetary motion. These topics describe how the distance between a planet and its star affects the planet's orbit and other properties. माइकेला कैसरियो ने पूछा, अल्लाह हबीबी, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि कोई तारा अपने कक्षीय ग्रह से 253,000 मील दूर है, तो कृपया क्या होगा? हबीबी ने उत्तर दिया, मुझे खेद है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि यह एक कक्षीय ग्रह है. से आपका क्या मतलब है? क्या आप कृपया अपना प्रश्न स्पष्ट कर सकते हैं? साथ ही कृपया ध्यान दें कि किसी तारे और उसके ग्रह के बीच की दूरी विशिष्ट तारे और संबंधित ग्रह के आधार पर व्यापक रूप से भिन्न हो सकती है. यदि आप उस तारे और ग्रह के बारे में अधिक विवरण प्रदान कर सकें जिसमें आपकी रुचि है, तो मैं अधिक जानकारीपूर्ण प्रतिक्रिया प्रदान करने में सक्षम हो सकता हूँ. इस बीच यहाँ एक संकेत है. यदि आप किसी ग्रह और उसके तारे के बीच की दूरी को बदलने के प्रभावों के बारे में जानकारी ढूंढ रहे हैं, तो आप कक्षीय यांत्रिकी या ग्रहों की गति के केपलर के नियमों के बारे में जानकारी खोजने का प्रयास कर सकते हैं. ये विषय बताते हैं कि किसी ग्रह और उसके तारे के बीच की दूरी ग्रह की कक्षा और अन्य गुणों को कैसे प्रभावित करती है. Michaela Caesario asked, Rolla Habibi, you know the distance between Venus and the Sun. Now, could you predict about what if the Sun could change his distance of 253,000 miles away from Earth, please? Habibi replied, certainly. The average distance between Venus and the Sun is approximately 67.24 million miles.
If the sun were to change its distance from Earth by 253,000 miles, it would have a significant impact on our planet's climate and environment. However, it's important to note that such a change is highly unlikely to occur in reality. To give you an idea of the potential effects of such a change, here are some possible scenarios. If the sun were to move closer to Earth by 253,000 miles, it would cause a significant increase in solar radiation and heat. This could lead to a rise in global temperatures, which could have far-reaching effects on the environment and climate. Conversely, if the sun were to move farther away from Earth by 253,000 miles, it would cause a decrease in solar radiation and heat. This could lead to a drop in global temperatures, which could also have significant effects on the environment and climate. It's worth noting that these are just hypothetical scenarios and that the actual effects of such a change would depend on many factors, including the specific distance involved, the duration of the change, and other environmental factors. I hope that helps. माइकेला कैसरियो ने पूछा, अल्लाह हबीबी, आप शुक्र और सूर्य के बीच की दूरी जानते हैं। अब क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि सूर्य पृथ्वी से 253,000 मील दूर अपनी दूरी बदल दे, तो कृपया। हबीबी ने उत्तर दिया, निश्चित रूप से। शुक्र और सूर्य के बीच की औसत दूरी लगभग 67.24 मिलियन मील है। यदि सूर्य पृथ्वी से अपनी दूरी 253,000 मील बदल ले, तो इसका हमारे ग्रह की जलवायु और पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वास्तविकता में ऐसा परिवर्तन होने की अत्यधिक संभावना नहीं है। आपको ऐसे परिवर्तन के संभावित प्रभावों का अंदाजा देने के लिए यहाँ कुछ संभावित परिदृश्य दिए गए हैं। यदि सूर्य पृथ्वी से 253,000 मील नजदीक चला जाए, तो इससे सौर विकिरण और गर्मी में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इससे वैश्विक तापमान में वृद्धि हो सकती है, जिसका पर्यावरण और जलवायु पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। इसके विपरीत, यदि सूर्य पृथ्वी से 253,000 मील दूर चला जाए, तो इससे सौर विकिरण और गर्मी में कमी आएगी। इससे वैश्विक तापमान में गिरावट आ सकती है, जिसका पर्यावरण और जलवायु पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। ये ध्यान देने योग्य है कि ये केवल काल्पनिक परिदृश्य है और इस तरह के परिवर्तन का वास्तविक प्रभाव कई कारकों पर निर्भर करेगा, जिसमें शामिल विशिष्ट दूरी, परिवर्तन की अवधि और अन्य पर्यावरणीय कारक शामिल हैं। मुझे आशा है कि वह मदद करेंगे। Michaela Caesario asked, Walla Habibi, I got a person who named himself as Scientist Singh. He considered moon a star like the sun. Could you tell him how much he's scientifically wrong? Please, Habibi replied, I'm sorry to hear that. The moon is not a star, but rather a natural satellite that orbits the Earth. It is made up of many different materials, with its core made up of iron and its crust made up of rocky materials. Stars are defined as objects whose mass is sufficient enough for the process of nuclear fusion to occur and be sustained. Nuclear fusion is a process by which hydrogen atoms are fused together to form helium, and it only happens when an object has enough mass. Stars are different from planets in that they are mostly more massive, allowing atoms to fuse together and release energy. The moon is nowhere near being massive enough for nuclear fusion to occur. Therefore, it is scientifically incorrect to consider the moon as a star like the sun. I hope this helps. माइकेला कैसरियो ने पूछा, अल्लाह हबीबी, मुझे एक व्यक्ति मिला जिसने अपना नाम वैज्ञानिक सिंह बताया।
वह चंद्रमा को सूर्य की तरह तारा मानता था। कृपया क्या आप उसे बता सकते हैं कि वह वैज्ञानिक रूप से कितना गलत है? हबीबी ने उत्तर दिया। मुझे यह सुनकर दुख हुआ। चंद्रमा एक तारा नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक उपग्रह है जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ये कई अलग अलग सामग्रियों से बना है। इसका कोर लोहे से बना है और इसकी परत बनी है चट्टानी सामग्री का। तारों को उन वस्तुओं के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनका द्रव्यमान परमाणु सम्मिलन की प्रक्रिया के घटित होने और कायम रहने के लिए पर्याप्त है। परमाणु सम्मिलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हाइड्रोजन परमाणु एक साथ जुड़कर हीलियम बनाते हैं, और ये तभी होता है जब किसी वस्तु में पर्याप्त द्रव्यमान होता है। तारे ग्रहों से भिन्न होते हैं क्योंकि वे अधिकतर अधिक विशाल होते हैं, जिससे परमाणु एक साथ जुड़ते हैं और ऊर्जा छोड़ते हैं। चंद्रमा परमाणु सम्मिलन के लिए पर्याप्त विशाल होने के करीब भी नहीं है। अतः चंद्रमा को सूर्य के समान तारा मानना वैज्ञानिक दृष्टि से गलत है। आशा है यह मदद करेगा। सही नहीं होती है, और आपकी किताबों में भी यही लिखा होगा कि हमारी किताबों में ये लिखा है, और ये गलत है। एक बच्चे की मेरे पास वीडियो आई है जिसके अंदर वो गूगल से दिखा के ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि देखिए मून तो सन की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी तो होती ही नहीं है। ये गूगल पे लिखा हुआ है। तो भाई गूगल पे लिखी हर चीज सही नहीं होती है, और आपकी किताबों में भी यही लिखा होगा कि हमारी किताबों में यही लिखा है, और ये गलत इन्फॉर्मेशन है। चंद्रमा सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट नहीं करता है क्योंकि चंद्रमा की अपनी रोशनी होती है। जी हाँ, गणेश चतुर्थी आने वाली है। आप किसी भी अपने जाने वाले पंडित से, जिसने मतलब किसी भी पंडित से नहीं, उस पंडित से पूछेगा जिसने वेदों का, शास्त्रों का, स्मृतियों का, उपनिषदों का, पुराणों का अध्ययन यानी धर्म ग्रंथों का उसमें पढ़ाई पठन रिसर्च थोड़ा बहुत किया, तो वो आपको बताएगा कि चंद्रमा की अपनी रोशनी है कि नहीं है। और गणेश चतुर्थी आ रही है, गणेश जी की स्टोरी भी है चंद्रमा के साथ, वो भी आप उनसे पूछ लीजिएगा, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग आपको लगेगी। तो पहली बात तो ये है, जब कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करती है तो कैसी दिखती है, उसको आपको मैं स्क्रीन पे डायग्राम फोटो दिखा देता हूँ। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी सर्कुलर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का, जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो रिफ्लेक्ट कैसे करता है, एक हॉटस्पॉट बनता है उसके ऊपर, ना कि वो पूरा का पूरा चमकना शुरू कर देता है। मूनलाइट जो है वो अपने आप मून प्रोड्यूस करता है। Michaela Caesario asked, Wallah Habibi, the Sikh claimed that moon has his own light because he trying to prove it, when a sphere reflecting the light. We got a bright little spot in lieu of full sphere. Now, could you help me to prove him wrong, please? Habibi replied, I understand. The Sikh's claim is incorrect. The moon does not have its own light source, and it does not emit light. Instead, it reflects the light of the sun, which is why it appears bright in the night sky. The moon's surface is covered with craters, lava flows, and old volcanoes that reflect sunlight and create the glow we see. Therefore, the Sikh's argument that a sphere reflecting light would produce a bright spot in lieu of a full sphere is not applicable to the moon because it does not emit light on its own.
I hope this helps. माइकेला कैसरियो ने पूछा, वल्लाह हबीबी, सिख ने दावा किया कि चंद्रमा के पास अपनी रोशनी है क्योंकि वह ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि जब एक गोला प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है तो हमें पूर्ण गोले के बदले में एक छोटा सा चमकदार स्थान मिलता है। अब क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं कृपया उसे गलत साबित करने के लिए? हबीबी ने उत्तर दिया, मैं समझता हूँ, सिख का दावा गलत है। चंद्रमा का अपना प्रकाश स्रोत नहीं है और यह प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। इसके बजाय ये सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है। यही कारण है कि यह रात के आकाश में उज्ज्वल दिखाई देता है। चंद्रमा की सतह गर्दों, लावा प्रवाह और पुरानी ज्वालामुखियों से ढकी हुई है जो सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करते हैं और हमें दिखाई देने वाली चमक पैदा करते हैं। इसलिए सिख का ये तर्क कि प्रकाश को परावर्तित करने वाला एक गोला एक पूर्ण गोले के बदले में एक उज्ज्वल स्थान उत्पन्न करेगा, इस पर लागू नहीं होता है चंद्रमा क्योंकि यह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। मुझे आशा है कि इससे मदद मिलेगी। Walla Habibi Michaela, now, look at this. He is look like a fake Sikh. His turban looks like an Islamic Maulana. वल्ला हबीबी माइकेला, अब इसे देखो, वह नकली सिखों जैसा दिखता है। उनकी पगड़ी किसी इस्लामिक मौलाना की तरह दिखती है। Michaela Caesario asked, Walla Habibi, who is the CEO of India's Space Research Organization. Habibi replied, I'm happy to help. The Indian Space Research Organization, ISRO, is headed by a chairman, who is a secretary to the Government of India and an executive of the Department of Space, DOS, which directly reports to the Prime Minister of India 1. As of January 15, 2022, the current chairman of ISRO is S. Samana. I hope that helps. जिला कैसरियो ने पूछा, वल्लाह हबीबी, भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के सीईओ कौन है? हबीबी ने जवाब दिया, मुझे मदद करने में खुशी होगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का अध्यक्ष एक अध्यक्ष होता है, जो भारत सरकार का सचिव होता है और अंतरिक्ष विभाग DOS का एक कार्यकारी होता है जो सीधे रिपोर्ट करता है। भारत के प्रधानमंत्री 15 जनवरी 2022 तक इसरो के वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। मुझे आशा है कि वह मदद करेंगे। Michaela Caesario asked, full form of S. Samanath, please. Habibi replied, S. Samanath is an Indian aerospace engineer who is currently serving as the chairman of the Indian Space Research Organization, ISRO. His full name is Sridhara Panika Samanath. He was born in July 1963 in Shetbala, Kerala, India. He completed his bachelor's degree in mechanical engineering from Thangal Kunju Masalia College of Engineering, Kollam, Kerala University and a master's degree in aerospace engineering from Indian Institute of Science, Bangalore with specialization in dynamics and control. Samanath has over 35 years of experience in the space sector and has held several key positions at ISRO, including Director of Vikram Sarabhai Space Center, VSSC, and Director of Liquid Propulsion Systems Center. He is known for his contributions to launch vehicle design, particularly in the areas of launch vehicle systems engineering, structural design, structural dynamics, and pyrotechnics. Michaela Caesario ने पूछा, एस सोमनाथ का पूर्ण नाम कृपया? हबीबी ने उत्तर दिया, एस सोमनाथ एक भारतीय एरोस्पेस इंजीनियर हैं जो वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। उनका पूरा नाम श्रीधर पनिक्कर सोमनाथ है। उनका जन्म जुलाई 1963 में चेरथला,
केरल, भारत में हुआ था। उन्होंने थंगर कुंजू मुस्लियार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, कोलम, केरल विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री पूरी की और गतिशीलता और नियंत्रण में विशेषज्ञता के साथ भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलोर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री पूरी की। सोमनाथ के पास 35 वर्षों से अधिक का अनुभव है अंतरिक्ष क्षेत्र और उन्होंने इसरो में कई प्रमुख पदों पर कार्य किया है, जिसमें विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (VSSC) के निदेशक और तरल प्रनोदन प्रणाली केंद्र के निदेशक शामिल हैं। उन्हें प्रक्षेपण यान डिजाइन में उनके योगदान के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से प्रक्षेपण यान सिस्टम इंजीनियरिंग के क्षेत्र में संरचनात्मक डिजाइन, संरचनात्मक गतिशीलता और आतिशबाजी बनाने की विद्या। Dear Sir Sridhara Panikar Samanath, could you discuss with a person called himself Scientist Singh, please? Certainly. Dear Sister Michaela, I hope he would be really Scientist Singh. Dear Brother Scientist Singh, could you tell me how are you sure that neither NASA nor ISRO can contain their space rocket landing on Moon? Dear Brother Sridhara Panikar Samanath, you know that the Moon is a light source as the Sun, because we get light from the Sun at daytime and get light from the Moon at nighttime. In a word, the Moon is the star like the Sun. What? Okay. Dear Brother Scientist Singh, could you tell me why are you addressing the Moon as star like the Sun? The Sun contains temperature of 170 million degrees Celsius. Now, let's assume that the Moon is a star like the Sun. Now, the problem is that Moon is 253,000 miles away from the Earth and the Sun is 67.4 million miles away from the Venus. Now, you cannot live in Venus more than 5 seconds in Venus because of temperature of 268 degrees Celsius. If a star would be 253,000 miles away from the Earth, then the Earth temperature would be 4200 degrees Celsius. But human comfortable temperature is 22 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. When you cannot survive in the temperature of 35 degrees Celsius, then you cannot survive in the temperature of 4200 degrees Celsius. Dear Sister Michaela, perhaps he lamely named himself Scientist Singh. प्रिय सर श्रीधर पनिकर सोमनाथ, क्या आप कृपया स्वयं को वैज्ञानिक सिंह कहने वाले व्यक्ति से चर्चा कर सकते हैं? निश्चित रूप से, प्रिय बहन मिशेला, मुझे आशा है कि वह वास्तव में वैज्ञानिक सिंह होगा। प्रिय भाई वैज्ञानिक सिंह, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप कैसे आश्वस्त हैं कि न तो नासा और न ही ISRO क्या वे अपने अंतरिक्ष रॉकेट को चंद्रमा पर उतरने से रोक सकते हैं? प्रिय भाई श्रीधर पनिकर सोमनाथ, आप जानते हैं कि चंद्रमा सूर्य की तरह एक प्रकाश स्रोत है, क्योंकि दिन के समय हमें सूर्य से प्रकाश मिलता है और रात के समय चंद्रमा से प्रकाश मिलता है। एक शब्द में, चंद्रमा सूर्य जैसा तारा है। क्या? ठीक है, प्रिय भाई वैज्ञानिक सिंह, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप चंद्रमा को सूर्य की तरह तारे के रूप में क्यों जोड़ रहे हैं? सूर्य का तापमान 170 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। अब मान लेते हैं कि चंद्रमा सूर्य की तरह एक तारा है। अब समस्या यह है कि चंद्रमा पृथ्वी से 253,000 मील दूर है और सूर्य शुक्र से 67.4 मिलियन मील दूर है। अब 268 डिग्री सेल्सियस तापमान के कारण आप शुक्र ग्रह पर 5 सेकंड से ज्यादा नहीं रह सकते। यदि कोई तारा पृथ्वी से 253,000 मील दूर होगा, तो पृथ्वी का तापमान 4200 डिग्री सेल्सियस होगा, लेकिन मनुष्य के लिए आरामदायक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस है। जब आप 35 डिग्री सेल्सियस के तापमान में जीवित नहीं रह सकते, तो आप 4200 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी जीवित नहीं रह सकते।
प्रिय बहन मिशेला, शायद उसने अपना नाम वैज्ञानिक सिंह रख लिया है. Michaela Caesario asked, Walla Habibi, could you tell me about current CEO of NASA, please? Habibi replied, certainly. The current administrator of NASA is Bill Nelson. He was sworn in as the 14th NASA administrator on May 3, 2021, and is responsible for leading the agency and carrying out the Biden-Harris administration's vision for NASA. Prior to his appointment, Nelson served in the U.S. Senate for 18 years from Florida and was a payload specialist on Space Shuttle Mission 61C in 1986. I hope that helps. Let me know if you have any other questions. Michaela Caesario ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे नासा के वर्तमान सीईओ के बारे में बता सकते हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, निश्चित रूप से. नासा के वर्तमान प्रशासक बिल नेल्सन हैं. उन्होंने 3 मई 2021 को 14वें नासा प्रशासक के रूप में शपथ ली और वह एजेंसी का नेतृत्व करने और नासा के लिए बिडेन हैरिस प्रशासन के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए जिम्मेदार है. पूर्व अपनी नियुक्ति तक नेल्सन ने फ्लोरिडा से 18 वर्षों तक अमेरिकी सीनेट में सेवा की और 1986 में अंतरिक्ष शटल मिशन 61C पर पेलोड विशेषज्ञ थे. मुझे आशा है कि वह मदद करेंगे. अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं. Walla Habibi, Joanna, you are now host of the discussion between Bill Nelson and scientist Singh. Shukran Habibi Michaela. Dear Sir Bill Nelson, could you discuss with a person called himself Scientist Singh, please? Certainly. Dear Sister Michaela, I hope he would be really Scientist Singh. Dear Brother Scientist Singh, could you tell me how are you sure that neither NASA nor ISRO can contain their space rocket landing on Moon? Dear Brother Bill Nelson, why do not you believe that? The Moon is a light source as the Sun because we get light from the Sun at daytime and get light from the Moon at nighttime. Why do not you believe that? The Moon is the star like the Sun. What? Okay, dear Brother Scientist Singh, could you tell me why are you addressing the Moon as star like the Sun? The Sun contains temperature of 170 million degrees Celsius. Now, let's assume that the Moon is a star like the Sun. Now, the problem is that Moon is 253,000 miles away from the Earth and the Sun is 67.4 million miles away from the Venus. Now, you cannot live in Venus more than 5 seconds in Venus because of temperature of 268 degrees Celsius. Even, you cannot communicate with any person because of the massive radiation from the heliosphere. If a star would be 253,000 miles away from the Earth, then the Earth temperature would be 4,200 degrees Celsius. But human can communicate properly via online or telephone in the temperature of 20 degrees Celsius to 44 degrees Celsius. And human comfortable temperature is 22 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. When you must have some medicine to be healed in the temperature of 35 degrees Celsius to 54 degrees Celsius. Your mobile phone lost its connection capability in the temperature of 70 degrees Celsius, then you cannot survive in the temperature of 4,200 degrees Celsius. And just forget to communication with others or posting your content on internet in the temperature of 4,200 degrees Celsius. Because that temperature, Earth magnetosphere is useless in front of Moon heliosphere. Dear Sister Michaela, perhaps his name should be unscientific Singh or anti-science Singh. Walla Habibi Joanna, अब आप बिल नेल्सन और वैज्ञानिक सिंह के बीच चर्चा के मेजबान हैं. शुक्रान हबीबी माइकेला. प्रिय सर बिल नेल्सन, क्या आप कृपया स्वयं को वैज्ञानिक सिंह कहने वाले व्यक्ति से चर्चा कर सकते हैं? निश्चित रूप से, प्रिय बहन मिशेला,
मुझे आशा है कि वह वास्तव में वैज्ञानिक सिंह होगा। प्रिय भाई वैज्ञानिक सिंह, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप कैसे आश्वस्त हैं कि न तो नासा और न ही ISRO क्या वे अपने अंतरिक्ष रॉकेट को चंद्रमा पर उतरने से रोक सकते हैं? प्रिय भाई बिल नेल्सन, आप ये क्यों नहीं मानते कि चंद्रमा भी सूर्य की तरह एक प्रकाश स्रोत है, क्योंकि हमें दिन के समय सूर्य से प्रकाश मिलता है और रात के समय चंद्रमा से प्रकाश मिलता है। तुम ये क्यों नहीं मानते कि चंद्रमा सूर्य जैसा तारा है? क्या? ठीक है, प्रिय भाई वैज्ञानिक सिंह, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप चंद्रमा को सूर्य की तरह तारे के रूप में क्यों जोड़ रहे हैं? सूर्य का तापमान 170 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। अब मान लेते हैं कि चंद्रमा सूर्य की तरह एक तारा है। अब समस्या यह है कि चंद्रमा पृथ्वी से 253,000 मील दूर है और सूर्य शुक्र से 67.4 मिलियन मील दूर है। अब 268 डिग्री सेल्सियस तापमान के कारण आप शुक्र ग्रह पर 5 सेकंड से ज्यादा नहीं रह सकते। यहाँ तक कि हेलियोस्फीयर से भारी मात्रा में विकिरण के कारण आप किसी भी व्यक्ति के साथ संवाद नहीं कर सकते हैं। यदि कोई तारा पृथ्वी से 253,000 मील दूर होगा, तो पृथ्वी का तापमान 4200 डिग्री सेल्सियस होगा, लेकिन मनुष्य 20 डिग्री सेल्सियस से 44 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी ऑनलाइन या टेलीफोन के माध्यम से ठीक से संवाद कर सकता है। और मनुष्य के लिए आरामदायक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस है। जब आपको 35 डिग्री सेल्सियस से 54 डिग्री सेल्सियस के तापमान में ठीक होने के लिए कोई दवा लेनी होगी, तो 70 डिग्री सेल्सियस के तापमान में आपका मोबाइल फोन अपनी कनेक्शन क्षमता खो देता है, तो आप 4200 डिग्री सेल्सियस के तापमान में जीवित नहीं रह सकते। डॉट और 4200 डिग्री सेल्सियस के तापमान में दूसरों के साथ बातचीत करना या इंटरनेट पर अपनी सामग्री पोस्ट करना तो भूल ही जाए, क्योंकि वह तापमान पृथ्वी मैग्नेस्फीयर चंद्रमा के हेलियोस्फीयर के सामने बेकार है। प्रिय बहन मिशेला, शायद उसका नाम अवैज्ञानिक सिंह या विज्ञान विरोधी सिंह होना चाहिए। अब जो लोग कह रहे हैं कि ये फेक लैंडिंग थी, उनको क्या नाम दिया जा रहा है? उनको नाम दिया जा रहा है कि ये वेस्ट का प्रोपोगेंडा कर रहे हैं जी। वेस्ट हमसे खुश नहीं है, वेस्ट जो है उसको बड़ी जलन हो रही है कि इंडिया कैसे चांद पे पहुंच गया। आप नोट करें कि मैं नहीं सिर्फ कह रहा हूं, लोग कह रहे हैं द ग्राफिक्स ऑफ दिस फेक मून लैंडिंग आर सो डैश even a child can see it's fake. We have never been to the moon or into space and we still have not today. I can't believe people will fall for the dash lies again. अब आप नोट कर सकते हैं कि ये बात सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूं कि नासा ने इनको पे किया है, फंड किया है चंद्रयान को, ISRO को। आप देख सकते हैं दिस इज फेक. नासा gave money and this pics to ISRO and told to publish them. Even Chandrayaan 3 is on Earth and not in Moon's orbit. सब मिले हुए हैं जी। और ये जिनके मैं कमेंट्स आपको दिखा रहा हूं, ये इंडियंस हैं। ये कहीं से भी पाकिस्तानी नहीं है, ये कहीं से भी किसी और शहर से आए हुए, किसी और मुल्क से, किसी और प्लेनेट से आए हुए लोग नहीं है। ये खुद इंडियंस हैं जो कि इकरार कर रहे हैं कि इट वॉज फेक।
Account name. Pun fact account handle. At pun underscore fact account cover photo. India account location. India. खाता नाम, गुण तथ्य, खाता हैंडल. At pun underscore fact, खाता cover photo. भारत, खाता स्थान. भारत. Account name. Elon Musk. Account handle. At Elon Musk. Account cover photo. XD. Twitter. Account location. XD headquarters. United States of America. खाता नाम, Elon Musk. खाता हैंडल. At Elon Musk. खाता cover photo. XD. Twitter. खाता स्थान. XD मुख्यालय. संयुक्त राज्य अमेरिका.
Account name. Ajay Nagar. Account handle. At Karimanati. Account cover photo. Karimanati. Account location. India. Khata naam. Ajay Nagar. Khata handle. At Karimanati. Account cover photo. Karimanati. Khata sthan. Bharat. Account name. Technical Sagar. Account handle. At Technical Sagar. Account cover photo. No cover photo. Account location. India. खाता नाम तकनीकी सागर खाता हैंडल एट टेक्निकल सागर खाता कवर फोटो कोई कवर फोटो नहीं खाता स्थान भारत
Account name, Michael Caesar. Account handle, at Caesar3N6L4ND. Account cover photo, the flag of England. Account location, Dhaka, Bangladesh. खाता नाम, Michael Caesar. खाता handle, at Caesar3N6L4ND. खाता cover photo, इंग्लैंड का झंडा. खाता स्थान, ढाका, बांग्लादेश. This is too suspicious. Account name, Grahame Linton. Account handle, at 1 Linton. Account cover photo, the flag of United Kingdom. Account location, no location found. ये दो संदिग्ध हैं. खाता नाम, ग्राहम लिंटन. खाता हैंडल, at 1 Linton. खाता कवर फोटो, यूनाइटेड किंगडम का ध्वज. खाता स्थान, कोई स्थान नहीं मिला.
Dear world, take hope from this London, UK video, that normal people will rise up in whatever way necessary, against the globalist tyrants seeking to control us all. These ULEZ cameras are designed to take the poorest in society's cars and therefore their mobility by making driving unaffordable. The UK is the world's guinea pig for WEF 15-minute cities, and this is just the start. प्रिय विश्व, इस लंदन यूके वीडियो से आशा करें कि सामान्य लोग हम सभी को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे ग्लोबलिस्ट तानाशाहों के खिलाफ किसी भी आवश्यक तरीके से उठेंगे। ये यूएलईजेड कैमरे समाज के सबसे गरीब लोगों की कारों को लेने और उनकी गतिशीलता को अप्रभावी बनाकर ड्राइविंग के लिए डिजाइन किए गए हैं। WEF के 15 मिनट वाले शहरों के लिए ब्रिटेन विश्व का गिनी पिग है और ये तो बस शुरुआत है। These people are truly frightening. Carbon rations per person, while they fly in private jets. Who voted for or elected these people who think they are the self-appointed rulers of the world? ये लोग वास्तव में भयावह हैं, प्रति व्यक्ति कार्बन राशन, जबकि वे प्राइवेट जेट में उड़ान भरते हैं। इन लोगों को किसने वोट दिया या चुना जो सोचते हैं कि वे दुनिया के स्वनियुक्त शासक हैं? If you can't already see this is what they have started implementing, you will be one of the depopulated or locked in a digital prison. Start saying no en masse and we will win. यदि आप पहले से ही यह नहीं देख पा रहे हैं कि उन्होंने इसे लागू करना शुरू कर दिया है, तो आप वंचित लोगों में से एक होंगे या डिजिटल जेल में बंद होंगे। सामूहिक रूप से नहीं कहना शुरू करें और हम जीतेंगे।
Dear brother Grahame Linton, could you tell me where actually are you from? What nonsense, dear stupid sister Michaela. I am from the United Kingdom. I have shown country by my cover photo. Sometime. We have the cover photo of foreign country. Now look at my Twitter account. My location is in Dhaka, Bangladesh. But my cover photo is the flag of England. Repeatedly, I ask you, where are you from? What nonsense. Who contains Twitter account with one country location and another country flag? I have told you that I am from the United Kingdom. Why do not Faria and you believe me? प्रिय भाई ग्राहम लिंटन, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप वास्तव में कहां से हैं? क्या बकवास है प्रिय मूर्ख बहन मिशेला, मैं यूनाइटेड किंगडम से। मैंने अपने कवर फोटो से देश को दर्शाया है। कभी कभी हमारे पास विदेश की कवर फोटो होती है। अब मेरे ट्विटर अकाउंट को देखें। मेरा स्थान ढाका, बांग्लादेश में है, लेकिन मेरी कवर फोटो इंग्लैंड का झंडा है। मैं बार बार तुमसे पूछता हूँ कि तुम कहाँ से हो। क्या बकवास है? एक देश का स्थान और दूसरे देश के झंडे वाला ट्विटर अकाउंट किसके पास है? मैंने आपको बताया है कि मैं यूनाइटेड किंगडम से। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? Michaela Caesario asked, Rolla Habibi, could you tell me if Grahame could be surname or first name, please? Habibi replied, certainly, according to the information I found. Grahame can be both a surname and a first name 12. The surname is believed to have originated in Scotland in the 12th century and is still prevalent today 3. The first name, on the other hand, is considered to be an English and Scottish given name too. I hope that helps. Michaela Caesario ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या ग्राहम उपनाम या पहला नाम हो सकता है? कृपया। हबीबी ने उत्तर दिया, निश्चित रूप से। मुझे जो जानकारी मिली उसके अनुसार ग्राहम एक उपनाम और पहला नाम दोनों हो सकता है। माना जाता है कि उपनाम की उत्पत्ति 12वीं शताब्दी में स्कॉटलैंड में हुई थी और आज भी प्रचलित है। पहला नाम, दूसरी ओर हाथ, एक अंग्रेजी और स्कॉटिश प्रदत्त नाम माना जाता है। मुझे आशा है कि इससे मदद मिलेगी। Michaela Caesario asked, Rolla Habibi, could you tell me if Linton could be surname or first name, please? Habibi replied, certainly, according to the information I found. Linton is a surname of English and Scottish origin. It can also be used as a unisex given name. The surname is believed to have originated in England and Scotland and is still prevalent today. The first name, on the other hand, is considered to be an English and Scottish given name. I hope that helps. Michaela Caesario ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या लिंटन उपनाम या पहला नाम हो सकता है? कृपया। हबीबी ने उत्तर दिया, निश्चित रूप से। मुझे जो जानकारी मिली उसके अनुसार लिंटन अंग्रेजी और स्कॉटिश मूल का एक उपनाम है। इसे यूनिसेक्स दिए गए नाम के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। माना जाता है कि उपनाम की उत्पत्ति इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में हुई थी और आज भी प्रचलित है। दूसरी ओर पहला नाम अंग्रेजी और स्कॉटिश प्रदत्त नाम माना जाता है। मुझे आशा है कि इससे मदद मिलेगी। Michaela Caesario asked, Rolla Habibi, could you tell me if Grahame Linton is an artificial name or natural name, please? Habibi replied, I'm sorry, but I am not able to determine whether Grahame Linton is an artificial name or a natural name. However, I can tell you that Grahame can be both a surname and a first name.
While Linton is a surname of English and Scottish origin, it can also be used as a unisex given name. The surname is believed to have originated in England and Scotland and is still prevalent today. The first name, on the other hand, is considered to be an English and Scottish given name. I hope that helps. मिशेला कैसरियो ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ग्राहम लिंटन एक कृत्रिम नाम है या प्राकृतिक नाम? कृपया। हबीबी ने उत्तर दिया, मुझे खेद है, लेकिन मैं यह निर्धारित करने में सक्षम नहीं हूँ कि ग्राहम लिंटन एक कृत्रिम नाम है या प्राकृतिक नाम। हालांकि मैं आपको बता सकता हूँ कि ग्राहम एक उपनाम और पहला नाम दोनों हो सकता है, जबकि लिंटन एक है अंग्रेजी और स्कॉटिश मूल का उपनाम। इसे यूनिसेक्स दिए गए नाम के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। माना जाता है कि उपनाम की उत्पत्ति इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में हुई थी और आज भी प्रचलित है। दूसरी ओर, पहला नाम एक अंग्रेजी माना जाता है और स्कॉटिश प्रदत्त नाम। मुझे आशा है कि इससे मदद मिलेगी। Michaela Caesario asked, Rolla Habibi, I found a person named Grahame Linton. He has claimed that Chandrayaan 3's graphics looks like fake. Now, could you tell him how many Western leaders would congratulate India's accomplishment on Chandrayaan 3, please? Habibi replied, certainly, according to the information I found. Top United Nations leadership congratulated India on the success of its lunar mission Chandrayaan 3, describing it as a giant step for humanity and a great achievement. The president of the 77th session of the United Nations General Assembly, Caesario, also congratulated India on the achievement. The US ambassador to the UN, Linda Thomas Greenfield, also congratulated India on Chandrayaan 3's historic moon landing and expressed her desire to deepen US-India space cooperation. Former UN Women Assistant Secretary General and Deputy Executive Director Anita Bhatia hailed India's scientific prowess and what it has achieved as a gift to all of humanity. I hope that helps. माइकेला कैसरियो ने पूछा, वल्लाह हबीबी, मुझे ग्राहम लिंटन नाम का एक व्यक्ति मिला। उसने दावा किया है कि चंद्रयान 3 के ग्राफिक्स नकली लगते हैं। अब, क्या आप उन्हें बता सकते हैं कि कितने पश्चिमी नेता चंद्रयान 3 पर भारत की उपलब्धि पर बधाई देंगे? हबीबी ने उत्तर दिया, निश्चित रूप से। मुझे मिली जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष नेतृत्व ने भारत को उसके चंद्र मिशन चंद्रयान 3 की सफलता पर बधाई दी और इसे मानवता के लिए एक बड़ा कदम और एक महान उपलब्धि बताया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष सीसाबा कुरोसी ने भी भारत को इस उपलब्धि पर बधाई दी। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने भी चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक चंद्रमा लैंडिंग पर भारत को बधाई दी और अमेरिका को गहरा करने की इच्छा व्यक्त की। भारत अंतरिक्ष सहयोग संयुक्त राष्ट्र की पूर्व महिला सहायक महासचिव और उप कार्यकारी निदेशक अनीता भाटिया ने भारत की वैज्ञानिक शक्ति की सराहना की और जो हासिल किया है वह पूरी मानवता के लिए एक उपहार है। मुझे आशा है कि वह मदद करेंगे। Dear brother Grahame Linton, here, I and my wife Devil Michaela took a selfie with Maulana Tariq Masood. Do you think is it real? Yes, my dear sister Joanna, it is a real selfie. Excellent. When I edited my wife Michaela's artificial intelligence generated devil form and Maulana Tariq Masood in Masjid's Adobe Photoshop, you accepted it as real. But when India's space agency accomplished Chandrayaan 3,
You claim that fake graphics. Excellent hypocrisy. प्रिय भाई ग्राहम लिंटन, यहाँ मैंने और मेरी पत्नी डेविल मिशेला ने मौलाना तारिक मसूद के साथ एक सेल्फी ली। क्या आपको लगता है कि क्या ये सच है? हाँ, मेरी प्यारी बहन जोआना, यह एक वास्तविक सेल्फी है। बहुत बढ़िया। जब मैंने अपनी पत्नी मिकाइला की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनित शैतान फॉर्म और मौलाना तारिक मसूद को मस्जिद के अडोब फोटोशॉप में संपादित किया, आपने इसे सच मान लिया। लेकिन जब भारत की अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रयान-3 पूरा किया तो आपने दावा किया कि ग्राफिक्स नकली है। घोर पाखंड। अब जो लोग कह मुझे लगता है कि अल्मास जेकब ने कोई नकली पायल को बिठा दिया। अब जहां तक इस वीडियो की बात है तो आप देख सकते हैं कि ये CGI था, कंप्यूटर से जनरेटेड इमेजेस थे। और आप नोट करें कि कमेंट सेक्शन के अंदर काफ़ी लोगों ने लिख के बताया कि हाँ भाई हम मानते हैं कि ये CGI था क्योंकि इसी तरह से रिप्रेजेंट होता है। अब एक्चुअल फुटेज तो हमारे पास है नहीं है, तो इसी तरह से रिप्रेजेंट करके दिखाया जाता है कि जी लैंडिंग हो गई है। तो अगर आप मान रहे हैं कि भाई ये CGI था तो पीछे रह क्या जाता है? इस तरह का CGI, घटिया तरीन CGI, जो सस्ता तरीन CGI, कोई भी नो सिकिया एनिमेटर आराम से अपने कंप्यूटर में, जिसके ग्राफिक कार्ड भी इतना बड़ा ना हो, वो आराम से ये 2D एनिमेशन आपको बनाकर दे देगा। जहां तक रियल फुटेज की बात है, जहां तक कहा जा रहा है कि जी आप उनकी वेबसाइट पर जाकर देखें, आपको रियल फुटेज देखने को मिलेगी, तो वो फुटेजेस भी मैंने देखी हैं, वो सब की सब फेक हैं। कैसे हैं वो मैं किसी और वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको बहुत सारी चीजें बताना चाहता हूं, तो टाइम कम है, इसलिए कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द आपको बताऊं। तो पहली चीज ये है कि जब अमेरिका ही चांद के ऊपर नहीं जा सका है तो ये कैसे पहुंच गए।
आपने अपनी जिंदगी में एक दफा तो कभी ना कभी इसको एक्सपीरियंस जरूर किया होगा कि आप हिलना चाहते हैं, आप बोलना चाहते हैं, आपसे बोला नहीं जाता, आप उठना चाहते हैं, आप उठ नहीं पाते हैं, आप अपनी बॉडी को बिल्कुल भी हिला नहीं पाते हैं। तो इसको कहा जाता है स्लीप पैरालिसिस, इसको कहा जाता है रैपिड आई स्लीप। आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि अब जितनी भी सुपर नेचुरल चीजें हैं वो कैमरा के अंदर रिकॉर्ड होने लगी हैं और आप सुपर नेचुरल चीजों को अपनी आंखों से होते हुए देखेंगे। तो आप देखिए इस वीडियो क्लिप को, फिर इस पर बात करते हैं कि स्लीप पैरालिसिस क्या होता है। I'm sure every one of you has experienced at least once in your lifetime. Okay, as you can see, this was recorded live. There is another heat signature captured on the thermal imaging camera, right on the top of the sleeping individual. This mysterious shape resembles that of a human body, lying on top of the man and seemingly strangling him. Some keen-eyed viewers pointed out that there's a lot of orbs flying around the room as well. So, what do you think? Could this be actual proof that demons are the source of sleep paralysis? Let us know your thoughts. Sleep paralysis. अब इस फुटेज में हो ये रहा है कि जिस बंदे को स्लीप पैरालिसिस होता था उसने डॉक्यूमेंट किया, उसने अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाई और उसने थर्मल इमेज वाला जो कैमरा है वो भी लगा के रखा था। और थर्मल इमेज जो कैमरा है उसके अंदर एक ऐसी छवि दिखाई देती है जो कि बिल्कुल इंसान नुमा होती है और इसके चेस्ट के ऊपर आकर बैठ जाती है, इसकी चेस्ट दब जाती है और ये बिल्कुल मूव करना चाहता है। आपने अपनी जिंदगी में एक दफा तो कभी ना कभी इसको एक्सपीरियंस जरूर किया होगा कि आप हिलना चाहते हैं, आप बोलना चाहते हैं, आपसे बोला नहीं जाता, आप उठना चाहते हैं, आप उठ नहीं पाते हैं, आप अपनी बॉडी को बिल्कुल भी हिला नहीं पाते हैं। तो इसको कहा जाता है स्लीप पैरालिसिस, इसको कहा जाता है रैपिड आई स्लीप। और साइंसी दुनिया के अंदर इसके डिफरेंट नाम रखे गए, लेकिन अगर आप गौर करें इस फुटेज के अंदर तो आप देखेंगे कि जब वो चीज इसके ऊपर आकर बैठती है तो रियल टाइम के ऊपर जब आप बेड पर लेटे हुए बंदे को देखेंगे तो आपको उसका जो पेट है वो थोड़ा सा नीचे दबता हुआ दिखाई देगा। आज की वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि स्लीप पैरालिसिस कहीं से भी कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल अटैक है। चाहे आप खुदा पर बिलीव करते हो, चाहे आप डीमंस पर बिलीव करते हो ना करते हो, तो भी आपने इस चीज को जरूर एक्सपीरियंस किया होगा। जिस किसी ने भी इसको एक्सपीरियंस किया, डॉक्टर्स ये कहते हैं कि वो जाग रहा होता है, उसका दिमाग। Michaela Caesario asked, could you tell me about sleep paralysis, please? Habibi replied, sure, I can help you with that. Sleep paralysis is a temporary inability to move or speak that occurs directly after falling asleep or waking up. It is a type of parasomnia, which are abnormal behaviors during sleep. During an episode of sleep paralysis, individuals maintain consciousness but experience a brief loss of muscle control, known as atonia. This can be accompanied by hallucinations, which often involve a feeling of suffocation. The exact cause of sleep paralysis is not known, but it is linked to sleep disorders and certain mental health conditions. 1. People whose sleep-wake cycles are disrupted by jet lag or shift work may also be at higher risk for sleep paralysis. Sleep paralysis can be categorized into two types: isolated sleep paralysis and recurrent sleep paralysis. Isolated sleep paralysis refers to one-off episodes that are not connected to an underlying diagnosis of narcolepsy, a neurological disorder that prevents the brain from properly controlling wakefulness. Recurrent sleep paralysis involves multiple episodes over time and can be associated with narcolepsy. If you experience sleep paralysis frequently or it interferes with your ability to get enough restful sleep, it's important to talk to your doctor. They may recommend treatment options such as improving your sleep hygiene or prescribing medication. मिशेला कैसरियो ने पूछा, क्या आप कृपया मुझे स्लीप पैरालिसिस के बारे में बता सकते हैं? हबीबी ने जवाब दिया, जरूर, मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ। स्लीप पैरालिसिस चलने फिरने या बोलने में अस्थायी अक्षमता है जो सीधे सोने या जागने के बाद होती है। यह एक प्रकार का पैरासोनिया है जो नींद के दौरान असामान्य व्यवहार है। नींद के पक्षाघात के एक प्रकरण के दौरान व्यक्ति चेतना बनाए रखते हैं लेकिन मांसपेशियों पर नियंत्रण में थोड़ी कमी का अनुभव करते हैं, जिसे एटोनिया के रूप में
जाना जाता है। इसके साथ मतिभ्रम भी हो सकता है, जिसमें अक्सर घुटन की भावना शामिल होती है। स्लीप पैरालिसिस का सटीक कारण ज्ञात नहीं है, लेकिन यह नींद संबंधी विकारों और कुछ मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों से जुड़ा हुआ है। जिन लोगों का नींद जागने का चक्र जेट लैग या शिफ्ट के काम के कारण बाधित होता है, उनमें भी स्लीप पैरालिसिस का खतरा अधिक हो सकता है। निद्रा पक्षाघात को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है: पृथक निद्रा पक्षाघात और आवर्तक निद्रा पक्षाघात। पृथक निद्रा पक्षाघात एक बार के एपिसोड को संदर्भित करता है जो नोकोलेप्सी के अंतर्निहित निदान से जुड़ा नहीं है। एक न्यूरोलॉजिकल विकार जो मस्तिष्क को जागने को ठीक से नियंत्रित करने से रोकता है। आवर्ती नींद पक्षाघात में समय के साथ कई प्रकरण शामिल होते हैं और इसे नोकोलेप्सी से जोड़ा जा सकता है। यदि आप अक्सर नींद के पक्षाघात का अनुभव करते हैं या ये पर्याप्त आरामदायक नींद लेने की आपकी क्षमता में हस्तक्षेप करता है, तो अपने डॉक्टर से बात करना महत्वपूर्ण है। वे उपचार के विकल्प सुझा सकते हैं, जैसे आपकी नींद की स्वच्छता में सुधार करना या दवा लिखना। Michaela Caesario asked, Rolla Habibi, could you tell me about some illusion a patient is facing during sleep paralysis, please? Habibi replied, certainly. During sleep paralysis, people may experience hallucinations that can be quite vivid and often frightening. These hallucinations can involve all of the senses, including sight, sound, touch, and smell. Some common hallucinations include sensing a presence. Many people report feeling as though someone or something is in the room with them during an episode of sleep paralysis. Seeing figures or shapes. Some people report seeing shadowy figures or other shapes in the room with them. Hearing sounds. People may hear all sorts of sounds during sleep paralysis, including footsteps, whispers, or even screams. Feeling pressure. Some people report feeling as though they are being held down or suffocated during an episode of sleep paralysis. It's important to note that these hallucinations are not real and are simply a result of the brain's activity during sleep paralysis. If you experience sleep paralysis frequently or it interferes with your ability to get enough restful sleep, it's important to talk to your doctor. They may recommend treatment options such as improving your sleep hygiene or prescribing medication. माइकेला कैसरियो ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप मुझे स्लीप पैरालिसिस के दौरान एक मरीज को होने वाले कुछ भ्रम के बारे में बता सकते हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, निश्चित रूप से। नींद के पक्षाघात के दौरान लोगों को मतिभ्रम का अनुभव हो सकता है, जो काफी ज्वलंत और अक्सर भयावह हो सकता है। इन मतिभ्रम में दृष्टि, ध्वनि, स्पर्श और गंध सहित सभी इंद्रियां शामिल हो सकती हैं। कुछ सामान्य मतिभ्रम में शामिल हैं: किसी की मौजूदगी का एहसास। बहुत से लोग स्लीप पैरालिसिस के दौरान ऐसा महसूस करते हैं जैसे कमरे में उनके साथ कोई व्यक्ति या कोई चीज है। आकृतियां या आकृतियां देखना। कुछ लोग कमरे में छायादार आकृतियां या उनके साथ अन्य आकृतियां देखने की शिकायत करते हैं। आवाजें सुनना। स्लीप पैरालिसिस के दौरान लोगों को हर तरह की आवाजें सुनाई दे सकती हैं, जिनमें कदमों की आहट, फुसफुसाहट या यहाँ तक कि चीखें भी शामिल हैं। दबाव महसूस होना। कुछ लोग स्लीप पैरालिसिस के दौरान ऐसा महसूस करते हैं जैसे उन्हें दबाया जा रहा है या उनका दम घुट रहा है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये मतिभ्रम वास्तविक नहीं है और केवल नींद पक्षाघात के दौरान मस्तिष्क की गतिविधि का परिणाम है। यदि आप अक्सर नींद के पक्षाघात का अनुभव करते हैं या ये पर्याप्त आरामदायक नींद लेने की आपकी क्षमता में हस्तक्षेप करता है, तो अपने डॉक्टर से बात करना महत्वपूर्ण है। वे उपचार के विकल्प सुझा सकते हैं, जैसे आपकी नींद की स्वच्छता में सुधार करना या दवा लिखना।
In this image, we cannot identify that if it is me, Michaela, or any other woman. इस तस्वीर में हम पहचान नहीं पा रहे हैं कि ये मैं मिशेला या कोई और महिला। In this image, we can identify that if it is me, Michaela. इस छवि में हम पहचान सकते हैं कि यह मैं मिशेला।
In this video, we can neither identify a woman to be Joanna Pedra or Joanna Begum, nor identify a woman to be Michaela Caesario or Mosammed Salman, nor identify a man to be Tariq Masood or Peter Smith. इस वीडियो में हम न तो किसी महिला की पहचान जोआना पेरा या जरीना बेगम के रूप में कर सकते हैं, न ही किसी महिला की पहचान मिशेला कैसरियो या मोसम्मद सलमा के रूप में कर सकते हैं, और न ही किसी पुरुष की पहचान तारिक मसूद या पीटर स्मिथ के रूप में कर सकते हैं। In this image, we could identify Joanna Pedra, Michaela Caesario and Tariq Masood in a masjid. इस छवि में हम एक मस्जिद में जोआना पेरा, मिशेला कैसरियो और तारिक मसूद को पहचान सकते हैं। Dear wife Michaela Caesario, Almas Jacob could not identify that we took a selfie with Tariq Masood in a Photoshop editing. He could not identify us in that selfie, but believed that we took the selfie with Tariq Masood in real world in the 144 pixel image. But when we discuss in Chandrayaan 3, Almas Jacob call it a fake graphics. Let's salute on his foolishness. प्रिय पत्नी मिशेला कैसरियो, अल्मास जेकब यह नहीं पहचान सके कि हमने फोटोशॉप एडिटिंग में तारिक मसूद के साथ सेल्फी ली थी। वह हमें उस सेल्फी में नहीं पहचान सका, लेकिन यकीन मानिए कि हमने तारिक मसूद के साथ वास्तविक दुनिया में 144 पिक्सल छवि में सेल्फी ली थी। लेकिन जब हम चंद्रयान 3 में चर्चा करते हैं, अल्मास जेकब इसे नकली ग्राफिक्स कहते हैं। आइए उनकी मूर्खता पर सलाम करें। Dear brother Sir Almas Jacob, why did you say that? Chandrayaan 3 contains India's worst space graphics. Dear stupid sister Michaela, I have said that because I have seen that these type of graphics can be drawn by third standard school students of Pakistan. Dear brother Sir Almas Jacob, we have seen it in one video. A patient of sleep paralysis had seen demons and it is recorded in a camera. Could you explain it? Yes, dear stupid sister Joanna. In a real world everybody can see demons if one patient is facing sleep paralysis. Dear stupid brother Sir Almas Jacob, firstly, if a patient is facing sleep paralysis disease, only he can see demons. But accordance with the environment, nobody can see the demons because in that time, demons are just illusion of the patient that only he can see. Secondly, let's focus on camera screen. Everybody are in 144 pixels, but in that times demons are only white blue colored shadow and on 48 pixels. Now, if you can accept demons real in this type of graphics, then what is the problem to accept graphics of Indian space researchers mission Chandrayaan 3? प्रिय भाई सर अल्मास जेकब, आपने ऐसा क्यों कहा? चंद्रयान 3 में भारत का सबसे खराब अंतरिक्ष ग्राफिक्स है। प्रिय मूर्ख बहन मिशेला, मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मैंने देखा है कि इस प्रकार के ग्राफिक्स पाकिस्तान के तीसरी कक्षा के स्कूली छात्रों द्वारा बनाए जा सकते हैं। प्रिय भाई सर अल्मास जेकब, हमने देखा है कि एक वीडियो में स्लीप पैरालिसिस के एक मरीज ने राक्षस को देखा था और यह एक कैमरे में रिकॉर्ड किया गया है। क्या आप इसे समझा सकते हैं? हाँ, प्रिय मूर्ख बहन जोआना, वास्तविक दुनिया में हर कोई राक्षसों को देख सकता है यदि एक रोगी नींद के पक्षाघात का सामना कर रहा है। प्रिय मूर्ख भाई सर अल्मास जेकब, सबसे पहले, यदि कोई रोगी स्लीप पैरालिसिस रोग से पीड़ित है, तो उसे केवल राक्षस ही दिखाई देते हैं, परंतु वातावरण के अनुसार राक्षसों को कोई नहीं देख सकता क्योंकि उस समय राक्षस रोगी का भ्रम मात्र होते हैं जिन्हें केवल वही देख सकता है। दूसरे, आइए कैमरा स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित करें। हर कोई 144 पिक्सल पर है, लेकिन उस समय राक्षस केवल सफेद नीले रंग की छाया और 48 पिक्सल पर है। अब यदि आप इस प्रकार के ग्राफिक्स में वास्तविक राक्षसों को स्वीकार कर सकते हैं,
तो भारतीय अंतरिक्ष शोधकर्ता के मिशन चंद्रयान 3 के ग्राफिक्स को स्वीकार करने में क्या समस्या है? Dear Sister Michaela, could I ask your wife Joanna that why did not she believe me that the United States NASA could not land on the moon, please? Certainly. Now, my dear beautiful wife Joanna, I think that stupid brother Almas Jacob should know the reason. You are right, my dear beautiful wife Michaela. Now, my dear stupid brother Sir Almas Jacob. If Sir Gaurav from Get Set Fee Science would say that NASA could not land on the moon, then perhaps I would believe. But accordance with your logic to prove that NASA could not land on the moon. First logic, Pakistan became world champion in ICC One-Day Cricket World Cup 1992. Then, since Pakistan could not be world champion in last 31 years, hence, Pakistan could not be world champion in 1992. Second logic, you could not see your star on sky in 4K camera, but you want to see stars on the moon sky in 144 pixel camera. Third logic, Antarctica continent is actually Arctica continent because it is in North Pole. That means, Inalillahi wa inalillahi razian, of the modesty of geography. Fourth logic, you rate light physics. And, fifth logic, you rate the Newton's gravitational law and Anaxagoras' logical discovery. Why would we believe you? प्रिय बहन मिशेला, क्या मैं आपकी पत्नी जोआना से पूछ सकता हूँ कि उसने मुझ पर विश्वास क्यों नहीं किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका का नासा चंद्रमा पर नहीं उतर सकता? कृपया। निश्चित रूप से। अब, मेरी प्यारी खूबसूरत पत्नी जोआना, मुझे लगता है कि बेवकूफ भाई अलमास जेकब को इसका कारण पता होना चाहिए। आप सही कह रही हैं, मेरी प्यारी खूबसूरत पत्नी मिशेला। अब, मेरे प्रिय मूर्ख भाई सर अलमास जेकब, अगर गेटसेट फ्लाई साइंस के सर गौरव कहते कि नासा चंद्रमा पर नहीं उतर सकता, तो शायद मुझे विश्वास हो जाता। लेकिन आपके तर्क के अनुसार यह साबित करने के लिए कि नासा चंद्रमा पर नहीं उतर सकता, पहला तर्क, आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 1992 में पाकिस्तान विश्व चैंपियन बना। फिर, चूंकि पिछले 31 वर्षों में पाकिस्तान विश्व चैंपियन नहीं बन सका, इसलिए पाकिस्तान 1992 में विश्व चैंपियन नहीं बन सका। दूसरा तर्क, आप 4 के कैमरे में आकाश पर अपना तारा नहीं देख सकते, लेकिन आप 144 पिक्सल कैमरे में चंद्रमा के आकाश पर तारे देखना चाहते हैं। तीसरा तर्क, अंटार्कटिका महाद्वीप वास्तव में अर्टिका महाद्वीप है क्योंकि यह उत्तरी ध्रुव में है, यानी भूगोल की शील की इन्नलिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चौथा तर्क, आपने प्रकाश भौतिकी का बलात्कार किया। और पांचवा तर्क, आपने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम और एनाक्सागोरस की तार्किक खोज का बलात्कार किया। हम आप पर विश्वास क्यों करेंगे? और इस बात के मैं कई सबूत पेश कर सकता हूं। उसमें सबसे पहला सबूत मैं आपको पेश करना चाहता हूं। एक साइंस जर्नलिस्ट ने एक किताब लिखी थी जिसके अंदर उसने प्रूव किया था कि नासा के अपने जो प्रेस के ऑफिसर्स थे, प्रेस ऑफिसर्स वो होते हैं जो कि जितना भी मीडिया होता है, जितना भी प्रेस होता है, जितना भी न्यूज़पेपर में आने वाली न्यूज़ वगैरह होती है, वो लोग प्रेस को हैंडल करते हैं। तो नासा के जो अपने प्रेस ऑफिसर्स थे, उन्होंने खुद लोगों को फ्लायर्स दिए थे बना के, जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि अपोलो 11 यानी कि जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज अल्ड्रिन वगैरह लोग ऊपर जो चांद पर गए थे, वो फेक था, हॉलीवुड ने क्रिएट किया था। आप सुनिए जरा। Science journalist Richard C. Hoagland wrote in his 2007 book Dark Mission that he saw NASA press officers helping distribute flyers to the press saying the landing was faked. Even though the astronauts brought back hundreds of moon rocks and took thousands of photographs of the moon, some people simply didn't believe it. Considering the technology of the time, going to the moon and back sounded like science fiction. In the 1971 movie Diamonds Are Forever, there's a sequence where Sean
अब ये वाला क्लिप आपने बड़े गौर से देखना है। एक मूवी थी जी, डायमंड्स आर फॉरएवर, जो कि जेम्स बॉन्ड की मूवी थी। और आप नोट करें, इसके अंदर पूरा सीक्वेंस दिखाया गया है कि कैसे हॉलीवुड ने मून लैंडिंग फेक की थी। Connery as James Bond breaks into a warehouse, and there he finds government agents filming a fake moon landing sequence. He steals a weird-looking moon buggy to escape. And Capricorn 1 told the कैप्रिकॉन 1 नामी एक मूवी थी, उसके अंदर भी ये चीज बताई गई थी कि मार्स मिशन और ये जो चांद का मिशन है, मून लैंडिंग, ये सब कुछ स्टेज था। हॉलीवुड स्टूडियोज के अंदर किसी फिल्म की तरह इसकी रिकॉर्डिंग हुई थी, कहीं से भी ये रियल मून लैंडिंग नहीं थी। story of a fake mission to Mars. As millions all over the world watched and listened, the President of the United States spoke to the astronauts across the vastness of space. There's only one small catch. It never happened. It's all a lie. तो अब देख सकते हैं आपके सामने कहा जा रहा है मूवी के अंदर कि ये कभी हुआ ही नहीं है, ये सब एक झूठ है। Michaela Caesario asked, Walla Habibi, could you tell me about Richard C. Hoagland, please? Habibi replied, Hello, this is Bing. I'm happy to help you. Smile. Richard Charles Hoagland is an American author and a proponent of various conspiracy theories about NASA, lost alien civilizations on the moon and Mars, and other related topics. 1. He is the host of The Other Side of Midnight, a radio show that explores science, the humanities and secret government projects too. Would you like to know more about him? माइकेला कैसरियो ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे रिचर्ड सी होगालैंड के बारे में बता सकते हैं? हबीबी ने जवाब दिया, हेलो, मैं बिंग हूँ, मुझे आपकी मदद करने में खुशी होगी। स्माइल। रिचर्ड चार्ल्स होगलैंड एक अमेरिकी लेखक और नासा, चंद्रमा और मंगल ग्रह पर खोई हुई विदेशी सभ्यताओं और अन्य संबंधित विषयों एक के बारे में विभिन्न षड्यंत्र सिद्धांतों के प्रस्तावक हैं। वह द अदर साइड ऑफ मिडनाइट के मेजबान हैं, एक रेडियो शो जो विज्ञान, मानविकी और गुप्त सरकारी परियोजनाओं दूर की खोज करता है। क्या आप उसके बारे में और जानना चाहेंगे? Michaela Caesario asked, Walla Habibi, what are some conspiracy theories of Richard C. Hoagland? Habibi replied, some of the conspiracy theories that Richard Hoagland supports are that the Apollo program discovered large artificial glass structures on the lunar surface and that NASA hid them from the public, that the face on Mars is a huge statue of an ancient Martian civilization and that there are buildings and pyramids in the Cydonia region, that there is a constant number called Hoagland's number that appears in many astronomical and archaeological phenomena and that it proves intelligent design. माइकेला कैसरियो ने पूछा, वल्लाह हबीबी, रिचर्ड सी होगालैंड के कुछ षड्यंत्र सिद्धांत क्या हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, रिचर्ड होगलैंड द्वारा समर्थित कुछ षड्यंत्र सिद्धांत हैं। अपोलो कार्यक्रम ने चंद्रमा की सतह पर बड़ी कृत्रिम कांच संरचनाओं की खोज की और नासा ने उन्हें जनता से छुपाया। कि मंगल ग्रह पर चेहरा एक प्राचीन मंगल ग्रह की सभ्यता की एक विशाल मूर्ति है और सिडोनिया क्षेत्र में इमारतें और पिरामिड हैं। कि एक स्थिर संख्या है जिसे होगलैंड की संख्या कहा जाता है, जो कई खगोलीय और पुरातात्विक घटनाओं में दिखाई देती है और यह बुद्धिमान डिजाइन साबित करती है। Michaela Caesario asked, Walla Habibi, but someone says that Richard C. Hoagland claims Apollo 11 lunar mission is fake moon landing. Could you explain if she said some incorrect about Richard C. Hoagland or not, please? Habibi replied, it is clear that there are some people who believe that the moon landing in 1969 was fake and use some misleading statements or movie clips to support that. However, it does not seem that Richard Hoagland is one of them. In fact, Hoagland says that the Apollo program was real, but that it discovered some strange things on the moon and that NASA hid them. So, it seems that whoever said that about Hoagland said something incorrect about him. मिशेला कैसरियो ने पूछा, वल्लाह हबीबी,
लेकिन कोई कहता है कि रिचर्ड सी होगलैंड का दावा है कि अपोलो 11 चंद्र मिशन नकली चंद्रमा लैंडिंग है। क्या आप बता सकते हैं कि उसने रिचर्ड सी होगलैंड के बारे में कुछ गलत कहा था या नहीं? कृपया। हबीबी ने उत्तर दिया, ये स्पष्ट है कि कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि 1969 में चंद्रमा पर उतरना फर्जी था और इसका समर्थन करने के लिए कुछ भ्रामक बयानों या मूवी क्लिप का उपयोग करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं लगता है कि रिचर्ड होगलैंड उनमें से एक है। वास्तव में होगलैंड का कहना है कि अपोलो कार्यक्रम वास्तविक था, लेकिन इसने चंद्रमा पर कुछ अजीब चीजें खोजी और नासा ने उन्हें छुपाया। इसलिए ऐसा लगता है कि जिसने भी होगलैंड के बारे में ऐसा कहा, उसने उसके बारे में कुछ गलत कहा। Michaela Caesario asked, Rolla Habibi, could you tell me about conspiracy theories on NASA, please? Habibi replied, hello, this is Bing. Conspiracy theories about NASA are a set of claims that doubt the accuracy or completeness of the information provided by the American Space Agency. Some of these theories relate to the moon landing, climate change, unidentified flying objects, and others. But these theories often lack scientific or logical evidence, and have been debunked by mathematics and facts. Would you like to know more about a specific conspiracy theory? माइकेला कैसरियो ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे नासा पर षड्यंत्र के सिद्धांतों के बारे में बता सकते हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, नमस्कार। ये बिंग है। नासा के बारे में षड्यंत्र सिद्धांत दावों का एक समूह है जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रदान की गई जानकारी की सटीकता या पूर्णता पर संदेह करता है। इनमें से कुछ सिद्धांत चंद्रमा पर उतरने, जलवायु परिवर्तन, अज्ञात उड़ान से संबंधित हैं वस्तुएं और अन्य। लेकिन इन सिद्धांतों में अक्सर वैज्ञानिक या तार्किक प्रमाण का अभाव होता है और इन्हें गणित और तथ्यों द्वारा खारिज कर दिया गया है। क्या आप किसी विशिष्ट षड्यंत्र सिद्धांत के बारे में अधिक जानना चाहेंगे? Michaela Caesario asked, Rolla Habibi, could you tell me about conspiracy theories on moon landing by NASA, please? Habibi replied, conspiracy theories on moon landing by NASA claim that the 6 crewed landings between 1969 and 1972 were hoaxes staged by NASA, possibly with the aid of other organizations. Some of the arguments used by the conspiracy theorists are that the flag planted by the astronauts appears to wave in the wind, that there are no stars in the background, that the shadows are inconsistent, and that there are no blast craters under the lunar modules. However, these arguments have been debunked by scientific and logical explanations, such as the lack of atmosphere on the moon, the brightness of the lunar surface, the uneven terrain, and the low thrust of the engines. Do you have any questions about these explanations? माइकेला कैसरियो ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे नासा द्वारा चंद्रमा पर उतरने पर साजिश के सिद्धांतों के बारे में बता सकते हैं? हबीबी ने जवाब दिया, नासा द्वारा चंद्रमा पर लैंडिंग पर साजिश के सिद्धांतों का दावा है कि 1969 और 1972 के बीच 6 चालक दल की लैंडिंग नासा द्वारा की गई धोखाधड़ी थी, संभवतः अन्य संगठनों की सहायता से। साजिश सिद्धांतकारों द्वारा इस्तेमाल किए गए कुछ तर्क ये हैं कि झंडा लगाया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि अंतरिक्ष यात्री हवा में लहरा रहे हैं, कि पृष्ठभूमि में कोई तारे नहीं हैं, कि छायाएं असंगत हैं और चंद्र मॉड्यूल के नीचे कोई विस्फोट क्रेटर नहीं है। हालांकि इन तर्कों को वैज्ञानिक और तार्किक व्याख्याओं द्वारा खारिज कर दिया गया है। जैसे जैसे चंद्रमा पर वायुमंडल की कमी, चंद्रमा की सतह की चमक, असमान भूभाग और इंजनों का कम जोर। क्या आपके पास इन स्पष्टीकरणों के बारे में कोई प्रश्न है? Michaela Caesario asked,
Wallah Habibi, could you tell me about the explanation of the following arguments used by the conspiracy theorists so that the flag planted by the astronauts appears to wave in the wind, that there are no stars in the background, that the shadows are inconsistent, please? Habibi replied, sure, I'll try to explain it briefly. The flag planted by the astronauts appears to wave in the wind because it had a metal rod along its top edge to keep it rigid, and because the astronauts rotated it back and forth to dig into the lunar soil, which made it ripple like a pendulum. There are no stars in the background because they are too faint and get washed out by the bright light of the moon and the Earth. The camera settings required to photograph the lunar surface also cannot capture the dim stars. The shadows are inconsistent because of the uneven terrain of the moon, which can create different angles and lengths of shadows. The sun is also not the only source of light, as the lunar surface reflects light as well. I hope this helps. Do you want me to show you some images or videos that illustrate these points? माइकेला कैसरियो ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप मुझे साजिश सिद्धांतकारों द्वारा इस्तेमाल किए गए निम्नलिखित तर्कों के स्पष्टीकरण के बारे में बता सकते हैं कि अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लगाया गया झंडा हवा में लहराता हुआ प्रतीत होता है, कि पृष्ठभूमि में कोई तारे नहीं है, कि कृपया छायाएं असंगत हैं? हबीबी ने जवाब दिया, जरूर, मैं उन्हें संक्षेप में समझाने की कोशिश करूंगा। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लगाया गया झंडा हवा में लहराता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि इसे कठोर रखने के लिए इसके ऊपरी किनारे पर एक धातु की छड़ लगी होती है, और क्योंकि अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा की मिट्टी में खुदाई करने के लिए इसे आगे पीछे घुमाया, जिससे ये लहराता हुआ दिखाई देता है। पेंडुलम। पृष्ठभूमि में कोई तारे नहीं है क्योंकि वे बहुत फीके हैं और चंद्रमा और पृथ्वी की तेज रोशनी से धुल जाते हैं। चंद्रमा की सतह की तस्वीर लेने के लिए आवश्यक कैमरा सेटिंग्स भी मंद तारों को कैद नहीं कर सकते। चंद्रमा के असमान भूभाग के कारण छायाएं असंगत होती हैं, जिससे छाया के विभिन्न कोण और लंबाई बन सकती है। सूर्य प्रकाश का एकमात्र स्रोत भी नहीं है, क्योंकि चंद्रमा की सतह भी प्रकाश को परावर्तित करती है। आशा है यह मदद करेगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ चित्र या वीडियो दिखाऊं जो इन बिंदुओं को स्पष्ट करते हैं? Michaela Caesario asked, Wallah Habibi, could you tell me about the explanation of Newton's first motion law to explain the following arguments used by the conspiracy theorists so that the flag planted by the astronauts appears to wave in the wind? Please, Habibi replied, Newton's first law of motion is also known as the law of inertia. It states that an object remains in its state of rest or uniform motion in a straight line unless an external force acts on it. This law can be used to explain why the flag planted by the astronauts appears to wave in the wind. When the astronauts rotated the flag to dig into the lunar soil, they applied an external force on it, which changed its state of motion. The flag started to move back and forth like a pendulum, but since there is no air resistance on the moon, there was no force to stop it. Therefore, the flag continued to move until the force of gravity balanced the force of tension in the rod. Does this make sense to you? माइकेला कैसरियो ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप मुझे न्यूटन के प्रथम गति नियम की व्याख्या के बारे में बता सकते हैं, जिसमें साजिश सिद्धांतकारों द्वारा इस्तेमाल किए गए निम्नलिखित तर्क ये हैं कि अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लगाया गया झंडा हवा में लहराता हुआ प्रतीत होता है? कृपया। हबीबी ने उत्तर दिया, न्यूटन के गति के पहले नियम को जड़त्व के नियम के रूप में भी जाना जाता है। इसमें कहा गया है कि कोई वस्तु एक सीधी रेखा में आराम की स्थिति या एक समान गति में रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है।
इस नियम का उपयोग ये समझाने के लिए किया जा सकता है कि अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लगाया गया झंडा हवा में लहराता हुआ क्यों दिखाई देता है। जब अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा की मिट्टी में खुदाई करने के लिए झंडे को घुमाया, तो उन्होंने उस पर एक बाहरी बल लगाया, जिससे उसकी गति की स्थिति बदल गई। झंडा पेंडुलम की तरह आगे पीछे हिलने लगा, लेकिन चूंकि चंद्रमा पर कोई वायु प्रतिरोध नहीं है, इसलिए इसे रोकने के लिए कोई बल नहीं था। इसलिए झंडा तब तक हिलता रहा जब तक गुरुत्वाकर्षण बल ने छड़ में तनाव के बल को संतुलित नहीं कर दिया। क्या यह आपको सही प्रतीत होता है? Michaela Caesario asked, Walla Habibi, could you tell me about some famous person who believes in conspiracy of moon landing, please? Habibi replied, Sure. I'll tell you about some famous people who believe in the conspiracy of moon landing. Bill Kaysing, an employee of the aerospace company Rocketdyne, is considered the originator of moon landing conspiracy theories. He claimed that the moon landings were faked by NASA and that the astronauts never left Earth orbit. Bart Sibrel, a filmmaker and self-proclaimed investigative journalist, produced several documentaries that accused NASA of staging the moon landings. He also confronted several Apollo astronauts and called them liars, which resulted in him being punched by Buzz Aldrin. Whoopi Goldberg, an actress and TV host, expressed doubts about the moon landings on The View, saying that the American flag planted on the moon seemed to wave in the wind. She also questioned why no other country has gone to the moon since then. There are other celebrities who have also expressed skepticism or disbelief about the moon landings, such as NBA star Kyrie Irving, rapper B.O.B., and filmmaker Oliver Stone. However, there is no credible evidence to support their claims, and most scientists and historians agree that the moon landings were real and authentic. Do you have any questions about these people or their arguments? Michaela Caesario ने पूछा, वल्ला हबीबी, क्या आप मुझे किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं जो मून लैंडिंग की साजिश में विश्वास करता है? हबीबी ने उत्तर दिया, जरूर। मैं आपको कुछ प्रसिद्ध लोगों के बारे में बताऊंगा जो चंद्रमा पर उतरने की साजिश में विश्वास करते हैं। एरोस्पेस कंपनी रॉकेडाइन के कर्मचारी बिल केसिंग को चंद्रमा पर उतरने की साजिश के सिद्धांतों का प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने दावा किया कि चंद्रमा पर लैंडिंग नासा द्वारा फर्जी थी और अंतरिक्ष यात्रियों ने कभी भी पृथ्वी की कक्षा नहीं छोड़ी। बात सिब्रेल, एक फिल्म निर्माता और स्वघोषित खोजी पत्रकार, ने कई वृत्तचित्रों का निर्माण किया, जिसमें नासा पर चंद्रमा पर लैंडिंग का मंचन करने का आरोप लगाया गया। उन्होंने कई अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों का भी विरोध किया और उन्हें झूठा कहा, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें बज़ एल्ड्रिन द्वारा मुक्का मारा गया। अभिनेत्री और टीवी होस्ट वूपी गोल्डबर्ग ने द व्यू पर चंद्रमा की लैंडिंग के बारे में संदेह व्यक्त करते हुए कहा कि चंद्रमा पर लगाया गया अमेरिकी ध्वज हवा में लहराता हुआ प्रतीत होता है। उन्होंने ये भी सवाल किया कि तब से कोई अन्य देश चंद्रमा पर क्यों नहीं गया। ऐसी अन्य हस्तियां भी हैं जिन्होंने चंद्रमा पर उतरने के बारे में संदेह या अविश्वास व्यक्त किया है, जैसे एनबीए स्टार कायरी इरविंग, रैपर B.O.B. और फिल्म निर्माता ओलिवर स्टोन। हालांकि उनके दावों का समर्थन करने के लिए कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है, और अधिकांश वैज्ञानिक और इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि चंद्रमा पर लैंडिंग वास्तविक और प्रामाणिक थी। क्या आपके पास इन लोगों या उनके तर्कों के बारे में कोई प्रश्न है? Michaela Caesario asked, Walla Habibi,
Could you tell me about what happened with Bal Sibrel after being a self-proclaimed investigative journalist, please? Habibi replied. Bart Sibrel is an American conspiracy theorist who has written, produced, and directed works in support of the false belief that the Apollo moon landings were staged by NASA under the control of the CIA. He is known for harassing and provoking Apollo astronauts, such as Neil Armstrong and Buzz Aldrin, and asking them to swear on the Bible that they walked on the moon. After being punched by Aldrin in 2002, Sibrel faded from the public eye and stopped making documentaries. He now runs a website called Sibrel.com, where he sells his DVDs and books, and posts articles about various topics, such as religion, politics, and health. What do you think of his actions and claims? माइकेला कैसरियो ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि स्वघोषित खोजी पत्रकार होने के बाद बार सिब्रेल के साथ क्या हुआ? हबीबी ने उत्तर दिया, बार सिब्रेल एक अमेरिकी षड्यंत्र सिद्धांतकार हैं, जिन्होंने इस गलत धारणा के समर्थन में लेखन, निर्माण और निर्देशन किया है कि अपोलो चंद्रमा लैंडिंग CIA के नियंत्रण में नासा द्वारा की गई थी। वह अपोलो को परेशान करने और भड़काने के लिए जाने जाते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन जैसे अंतरिक्ष यात्रियों से कहा गया कि वे बाइबल की शपथ लें कि वे चंद्रमा पर चले थे। 2002 में एल्ड्रिन द्वारा मुक्का मारे जाने के बाद सिब्रेल लोगों की नजरों से ओझल हो गए और उन्होंने वृत्तचित्र बनाना बंद कर दिया। वह अब Sibrel.com नामक एक वेबसाइट चलाता है, जहां वह अपनी डीवीडी और किताबें बेचता है और धर्म, राजनीति और स्वास्थ्य जैसे विभिन्न विषयों पर लेख पोस्ट करता है। आप उसके कार्यों और दावों के बारे में क्या सोचते हैं? Michaela Caesario asked. I think Bal Sibrel's claims are incorrect and his action is like blasphemous by harassing astronauts. I think he is lucky that he deserves punishment in USA without blasphemy law because of harassing the honorable astronauts. Habibi replied. I respect your opinion and I agree that Sibrel's claims are incorrect and his actions are disrespectful. However, I would not wish harm or punishment on anyone, even if they are wrong or rude. I think the best way to deal with conspiracy theorists is to educate them with facts and evidence, and to avoid violence or insults. Do you agree? मिशेला कैसरियो ने पूछा, मुझे लगता है कि बार सिब्रेल के दावे गलत हैं और उनका कृत्य अंतरिक्ष यात्रियों को परेशान करके ईशनिंदा जैसा है। मुझे लगता है कि वह भाग्यशाली है कि सम्माननीय अंतरिक्ष यात्रियों को परेशान करने के कारण वह ईशनिंदा कानून के बिना संयुक्त राज्य अमेरिका में सजा के हकदार हैं। हबीबी ने उत्तर दिया, मैं आपकी राय का सम्मान करता हूं और मैं सहमत हूं कि सिब्रेल के दावे गलत हैं और उनके कार्य अपमानजनक हैं। हालांकि मैं किसी को नुकसान या सजा नहीं देना चाहूंगा, भले ही वे गलत या असभ्य हों। मुझे लगता है कि इससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका है साजिश सिद्धांतकारों को तथ्यों और सबूतों के साथ शिक्षित करना है और हिंसा या अपमान से बचना है। क्या आप सहमत हैं? Michaela Caesario asked. Wallah Habibi, could you tell me why some people still believe in this type of conspiracy theories on moon landing, please? Habibi replied, that's a good question. There are different reasons why some people still believe in moon landing conspiracy theories, but here are some of the common ones. Cognitive bias. Some people have a tendency to reject or distort information that contradicts their existing beliefs or worldview. They may also seek out or favor information that confirms their beliefs, even if it is unreliable or inaccurate.
This can lead him to ignore or dismiss the overwhelming evidence that supports the moon landings, and to focus on the few anomalies or inconsistencies that can be easily explained. Social influence. Some people may adopt or spread conspiracy theories because they want to fit in with a group, to rebel against authority, or to gain attention or popularity. They may also feel a sense of superiority or empowerment by knowing something that others don't, or by challenging the official narrative. This can make them resistant to change their minds or admit their mistakes, even when faced with facts or logic. Psychological factors. Some people may have personality traits, such as paranoia, narcissism, or low self-esteem, that make them more prone to believe in conspiracy theories. They may also have emotional needs, such as coping with uncertainty, anxiety, or loss of control, that make them more attracted to conspiracy theories. They may find comfort or meaning in believing that there is a hidden order or purpose behind the events, rather than accepting randomness or complexity. These are some of the possible reasons why some people still believe in moon landing conspiracy theories. However, not all conspiracy theorists are irrational or ignorant. Some of them may have genuine doubts or questions that deserve respectful and honest answers. Therefore, I think it is important to engage with them in a civil and constructive way, and to provide them with credible sources and arguments that can help them understand the truth. What do you think of these reasons? Do you agree with them? माइकेला कैसरियो ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कुछ लोग अभी भी चंद्रमा पर उतरने पर इस तरह की साजिश के सिद्धांतों पर विश्वास क्यों करते हैं? हबीबी ने जवाब दिया, यह एक अच्छा सवाल है। ऐसे अलग अलग कारण हैं कि क्यों कुछ लोग अभी भी चंद्रमा पर उतरने की साजिश के सिद्धांतों पर विश्वास करते हैं, लेकिन यहाँ कुछ सामान्य कारण हैं। संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह। कुछ लोगों में ऐसी जानकारी को अस्वीकार करने या विकृत करने की प्रवृत्ति होती है जो उनकी मौजूदा मान्यताओं या विश्व दृष्टिकोण के विपरीत होती है। वे ऐसी जानकारी की भी तलाश कर सकते हैं या उसका पक्ष ले सकते हैं जो उनके विश्वास की पुष्टि करती हो, भले ही वह अविश्वसनीय या गलत हो। इससे वे चंद्रमा पर उतरने का समर्थन करने वाले भारी सबूतों को अनदेखा या खारिज कर सकते हैं, और कुछ विसंगतियों या विसंगतियों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जिन्हें आसानी से समझाया जा सकता है। सामाजिक प्रभाव। कुछ लोग षड्यंत्र के सिद्धांतों को अपना सकते हैं या फैला सकते हैं क्योंकि वे एक समूह में फिट होना चाहते हैं, सत्ता के खिलाफ विद्रोह करना चाहते हैं, या ध्यान या लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। वे कुछ ऐसा जानकर जो दूसरों को नहीं पता, या आधिकारिक आख्यान को चुनौती देकर श्रेष्ठता या सशक्तिकरण की भावना भी महसूस कर सकते हैं। यह उन्हें तथ्यों या तर्क का सामना करने पर भी अपना मन बदलने या अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए प्रतिरोधी बना सकता है। मनोवैज्ञानिक कारक। कुछ लोगों में व्यक्तित्व के लक्षण हो सकते हैं, जैसे व्यामोह, संकीर्णता या कम आत्मसम्मान, जो उन्हें षड्यंत्र के सिद्धांतों पर विश्वास करने के लिए अधिक प्रवण बनाते हैं। उनकी भावनात्मक जरूरतें भी हो सकती हैं, जैसे अनिश्चितता, चिंता या नियंत्रण की हानि से निपटना, जो उन्हें षड्यंत्र के सिद्धांतों के प्रति अधिक आकर्षित करती है।
उन्हें यादृच्छिकता या जटिलता को स्वीकार करने के बजाय यह विश्वास करने में आराम या अर्थ मिल सकता है कि घटनाओं के पीछे एक छिपा हुआ क्रम या उद्देश्य है। ये कुछ संभावित कारण है कि क्यों कुछ लोग अभी भी चंद्रमा पर उतरने की साजिश के सिद्धांतों पर विश्वास करते हैं। हालांकि सभी षड्यंत्र सिद्धांतकार तर्कहीन या अज्ञानी नहीं हैं। उनमें से कुछ के पास वास्तविक संदेह या प्रश्न हो सकते हैं जो सम्मानजनक और ईमानदार उत्तर के योग्य हों। इसलिए मुझे लगता है कि उनके साथ सभ्य और रचनात्मक तरीके से जुड़ना और उन्हें विश्वसनीय स्रोत और तर्क प्रदान करना महत्वपूर्ण है जो उन्हें सच्चाई समझने में मदद कर सकते हैं। आप इन कारणों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप उन लोगों से सहमत हैं